अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक वेरी वेरी इजी मटन मसाला। ये रोटी के साथ, फुल्के के साथ, घी राइस के साथ या फिर आपम, इडियापम, स्ट्रिंग हॉपर्स जिसे बोलते हैं, इन सब के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। 250 to 300 ग्राम्स मटन करी कट का मसाला बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स पहले ग्राइंड कर लेते हैं। तो 1 इंच पीस जिंजर, 10 से 12 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 1 टीस्पून सौंफ aniseed जिसे बोलते हैं, 3 ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून चिली पाउडर, आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कुछ थोड़ा पानी ऐड करिए और ग्राइंड टू अ फाइन पेस्ट। अब एक प्रेशर पैन में 1 ladle ऑयल ऐड करिए। When the oil becomes hot, add 2 onions finely chopped and saute till golden brown. Now add the ground paste. Saute for a minute or so. अगर आपको लग रहा है तो मसाला थोड़ा सा लग रहा है कुकर के बेस में, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लीजिए। Then add the mutton. When the raw smell goes, add the mutton and saute well for a minute. Also add a teaspoon of salt and a quarter teaspoon of garam masala powder and continue sauteing. Sprinkle water if necessary. Continue sauteing till the oil leaves the sides. Now add 1 large tomato finely chopped and continue sauteing. After a few seconds, add a cup of water. Mix, cover and pressure cook for 3 to 4 whistles. After 4 whistles, let the pressure come down on its own, open, and depending on the consistency you need, leave it as it is or thicken the consistency by cooking for another 3 to 5 minutes. Now let's add one final ingredient, that is a teaspoon of lemon juice. Mix, cover and let it rest till it's time to serve. Garnish with coriander leaves. Mutton masala is now ready to serve. So do try it out. Like, share and subscribe. Ingredients as always mentioned in the description box. Thank you for watching.